Good evening to the dignitaries on the dais, distinguished guests, industry leaders, members of the India-Singapore business community. It is my privilege to welcome you all to the Investor Roadshow of the Government of Uttar Pradesh, being organized as part of the Honorable Chief Minister's visit to Singapore. This event is being organized by Invest UP of the Government of Uttar Pradesh, along with the High Commission of India, and we have the Singapore Business Federation and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, as our business partners for the event. Ladies and gentlemen, once again, a warm welcome to the Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath, the Minister for Finance in the Government of Uttar Pradesh, the Honorable Minister for Infrastructure and Industry Development, the High Commissioner, His Excellency, and the senior officials from the State Government of Uttar Pradesh. We welcome you all for this event. In the interest of time, we will start with the event right away. I would like to invite the High Commissioner of India to Singapore, Shri Shilpak Ambulesa, to deliver the welcome address. Very good evening to all of you, respected Honorable CM Yogi Adityanath ji, his cabinet colleagues and delegates from the Government of Uttar Pradesh. A very warm welcome to all of you in Singapore. I would just be very brief. Honorable CM and the delegation came to Singapore yesterday morning. They've had a series of government-to-government meetings, including call on the President, Prime Minister, meeting with Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Home Minister, and the Energy Minister. We've had some site visits to few companies which are interested in investing in Uttar Pradesh, and we've had a series of business-to-business meetings with most of the Singaporean companies, funds, and other institutions interested in investing in UP and in India. So we come to the most important event, the Investor Roadshow here in Singapore. And I'm very thankful for all of you for participating and coming in such large numbers at such short notice. Just a couple of points on the India-Singapore relations. The relationship have been very active in the last 1 year, and we've had various high-level exchanges, including the visit of Prime Minister Lawrence Wong to India, which set the tone for developing relations in all the different 6 identified pillars of our collaboration. One thing which emerged in the India-Singapore Ministerial Roundtable as well as during the high-level exchanges was a greater interaction between Singapore and different states of India. So as you would have seen in the last couple of years, we've had many state-level delegations, and this year we're beginning with Uttar Pradesh, and such a large delegation from Uttar Pradesh coming to present their case. And I'm very happy to see so much of enthusiasm from the Singapore investor community looking at Uttar Pradesh. A couple of points which I have learned in the last 2 days in Uttar Pradesh. It is a revenue surplus state. Economy has developed, doubled in the last 9 years. And Singaporeans understand what airport-led development is all about. So they're launching or inaugurating the new airport in Xever very soon. And around that, the whole connectivity and logistics and multimodal parks are being developed. So more on that we will hear from the delegation of Uttar Pradesh. But I thank you very much for coming in such large numbers, and I wish the Investor Roadshow today a complete success. Thank you. Thank you, sir, for setting the tone for tonight's event. I now invite Mr. Prasoon Mukherjee, the Vice Chairman of International Action Committee of Singapore Business Federation, to address the gathering. Honorable Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, sir, we are very grateful that you are in Singapore today, and the Singapore Business Federation had worked for almost 3 years, 2.5 years to 3 years, to bring you to Singapore, and we are very, very happy that you have finally arrived, and everybody, almost 600 people in this hall, and everybody is a businessman waiting to hear from you. That was
On behalf of the Singapore Business Federation and SBF Indian Business Community, I would like to thank the government of Uttar Pradesh, the High Commission of India, and FICCI for partnering with us on this significant event. Singapore companies have long viewed India as a strategic growth market. What is changing today is not whether to invest in India, but how and where to invest most effectively. Uttar Pradesh presents a compelling case in this regard. With a population of approximately 240 million and an economy approaching $300 to 350 billion, UP is not a peripheral market. It's a subnational economy of scale. The state's ambition to build a $1 trillion economy signals both intent and confidence. More importantly, the development model is increasingly structured. We observed three notable shifts. First, sustained capital deployment into infrastructure. Second, the sector-focused policy platforms, including electronics components, data centers. Third, a governance emphasis on facilitation, monitoring, and execution continuity. For Singapore enterprises, this shift matters. Singapore companies tend to participate where infrastructure, regulatory clarity, and sector depth converge. We bring strengths in integrated armor and industrial development, advanced capabilities in airport and logistics systems, digital infrastructure, sustainability solutions, and in advanced manufacturing. These capabilities align beautifully with the structural priorities articulated by Uttar Pradesh. At SBF, we have seen growing enterprise interest in state-level engagement across India. In a federal market such as India, direct access to Chief Minister and senior officials provides clarity on policy intent, sector priorities, and execution frameworks, elements that are critical to enterprise decision-making. For Singapore companies represented here this evening, Uttar Pradesh offers a combination of scale, infrastructure alignment, and sector depth that merits serious commercial evaluation. As enterprises considers their India growth strategies, structure state-level partnerships, particularly in infrastructure, digital systems, logistics, manufacturing, and sustainability, will increasingly define competitive advantage. SBF stands ready to facilitate dialogue, follow-through, and enterprise engagement. The planned business mission to Uttar Pradesh is in 2026, will provide a platform for deeper exploration and sector-focused discussion. Honorable Chief Minister, we thank you for your leadership and for bringing your delegation to Singapore. We look forward to strengthening business ties and building practical long-term partnerships. At the end, I say we stand committed. We are the largest and the apex chamber of Singapore with 34,000 members, and we will reach out to every company as such so that they find some interest and some interesting work to do and invest in Uttar Pradesh. Thank you, sir. Thank you, Mr. Prasoon, for your address. To present a snapshot of the transformation that has been underway in UP, what better way than to have it in an audiovisual medium? So we have a short AV clip that will now be played out. And yes, you can see the transformation that has undergone. Under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh has emerged as the crowned jewel, redefining growth at scale. As India advances towards its aspirational goal, Viksit Bharat at 2047, Uttar Pradesh stands ready to lead, to build, and to deliver. Viksit Uttar Pradesh at 2047 is a long-term investment blueprint. The ambition is clear: a $1 trillion economy by 2030 and a $6 trillion economy by 2047, driven by reform-led governance and strong execution, anchored by India's largest industrial land bank, which is distributed in strategic clusters, and with sector-ready parks, which are equipped with plug-and-play infrastructure. Viksit Bharat 2047 is backed by a dedicated FDI, FCI, Fortune Global and Fortune India 500 companies
investment promotion policy to incentivize foreign investments, which are investing in the state across an array of sectors, namely global capability centers, automobile, EVs, AI, IT, ITES, semiconductor, electronics manufacturing, green hydrogen, food processing, tourism, and data centers. These strategic initiatives are further strengthened by the state's industrial investment and employment promotion policy. Uttar Pradesh offers one of India's strongest multimodal advantages. The state now boasts of the largest expressway network in the country, with 7 operational and 15 upcoming expressways, along with 19 domestic and 5 international airports, an extensive rail network spanning nearly 9,000 kilometers across 5 railway zones, access to the national inland waterway connecting the state to major ports, and located at the crossroads of national freight corridors, Uttar Pradesh offers seamless national and global access. The state's leadership deeply respects the investors' work ethics and punctuality. It is this very commitment to efficiency and reliability that has enabled Uttar Pradesh to be ranked as the #1 state in the ease of doing business, driven by decisive reforms and digital-first governance. At the core of this transformation is Nivesh Mitra, the state's single-window investment platform, delivering over 500 integrated services to more than 1.9 million users. The confidence of the investor is further strengthened by 115 dedicated Udyami Mitras, providing end-to-end hand-holding, 5 sector-focused desks and 8+ country desks supporting international investors. Uttar Pradesh also has a clear demographic advantage in the country and is powered by India's largest and youngest talent pools, and supported by a strong ecosystem of premium technical institutions, universities and skill development centers. This isn't potential. It's performance, scaling with speed. Invest in Uttar Pradesh. Come, partner with India's growth engine. I believe the words lead, build, and deliver capture the essence of the transformation that has happened in Uttar Pradesh. To delve deeper into the roadmap, the focus sectors, and the investment opportunities in the government of Uttar Pradesh, I invite Shri Deepak Kumar, the Infrastructure and Industrial Development Commissioner of the government of Uttar Pradesh, to deliver his presentation. Thank you. Good evening, everyone. On behalf of our Honorable Chief Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Minister for Industries, and the whole UP delegation, I welcome you all. It is indeed a privilege to welcome such a illustrious gathering. I'll take you through a very short presentation on what UP has done, and we will show you what all potential is there. So we have, population-wise, we have 250 million, almost, if it was a country, 5th largest country. Land area of 243,000 square kilometers. Economy, 350 billion US dollars, our GSDP. And the population, it's the largest consumer base. We constitute 17% of the national population. 56% of it is young, providing you the opportunity to skill them as you want them. And we have excellent connectivity, be it roads, expressways, or airports. We have 16 operational airports. 4 of them are international. One, the largest in Southeast Asia, is coming up at Jewar. It will be operational from next month. 55% of India's expressway is in Uttar Pradesh. Why Uttar Pradesh is the next global industrial engine? We are an export hub, 26.10 billion Singapore dollars.
The merchandise export, this is the figure in 23-24. It has seen a 102% rise in last 7 years. We have a very robust MSME sector. 70% of the state's total merchandise exports is from this sector. 9.6 million registrations are there in MSME. 55% of mobile phones are manufactured in UP. This is the national figure, 55% of the phones that are being manufactured. And data center 644 megawatts capacity is right now existing there in Uttar Pradesh. And if you see the graph on the right, the growth has been phenomenal. We have grown, post-COVID, we have grown at 16%, while the national average is 14%. So we are already accelerating ahead of the national average. And from 16, 17 to right now in last 8 years, the growth has been 2.2 times. This is our GSDP. You can see the average growth rate, and post-COVID, as I said, it is 16%. We are ranked second in export preparedness index. We have 75 export clusters. Each district has a ODOP, one district, one product scheme. Of the 2 states, UP is one which has a defense corridor, and we have 6 nodes. We will be explaining that further. We have 27 IMLCs, Integrated Manufacturing and Logistic Centers, clusters. We are leader state in logistics, leading state in implementing business reforms. Number of factories, you can see, it has gone 3 times since 2003, and it has doubled since 2016-17. Right now, we stand at 31,000. So every year, the figures we have given for every year, you can see 23-24, it is 3,200. 24-25, 3,644. 25-26 is a 3,932. We are showing you the land bank that is available. It is spread throughout. Most of you may be familiar with Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway Authority, but the land banks, industrial land bank is spread throughout. You have the Expressway Authority, and we have 27 IMLCs spread there. The land bank of 12,500 acres is there. UPCIDA, which is the State Industrial Development Authority, has a land bank of 10,000. The defense corridor, as I said, this has 6 nodes, and you can see those 6 nodes. We have about 5,000 acres there. Bundelkhand, the Bundelkhand Industrial Development Authority, BIDA. The BIDA is being developed, which will be bigger than Noida. It has 56,000 acres. And Yamuna Expressway, already you are aware, it has about 3,300 square kilometers is under notification. It is being acquired. Now we come to the fact that it is said that we are a landlocked state, but that disadvantage is no more. With Honorable CM's direction, as I said, expressways, national highways crisscross the whole state. And with the access of those expressways and with our policies, which subsidizes the freight, you are at any of the largest export hubs in 18 hours or 48 hours. You can see those distances yourself. The freight corridor runs through UP. The western and the eastern freight corridor, they diverge in Uttar Pradesh, near Jewar Airport, near Dadri. And you see 33% of the freight corridor runs through UP. So that is a big advantage that takes you to the ports. 47 stations out of 115 stations of the corridor, that is based in Uttar Pradesh. So that gives us a big advantage. And we are developing a cargo hub near Jewar. These are the priority sectors. You can have a pick. Electronics and IT. You see 200 plus electronics manufacturing companies are operational. 42% of them have been added in the last 20 months. The emerging and upcoming sectors like semiconductors and data centers,
We have a presence there already. Global capability centers, Noida is a strong hub. It is an established one, and we are promoting that. We have a specific policy for that. I will be taking you through that. We have a pharma park coming up and a medical device park, pharma park in Lalitpur, in Bundelkhand, and medical device park in Noida. Tourism and hospitality, if you look at the footfall, tourist footfall, it has been growing in UP. If you leave out Kumbh, that is a phenomena. If you leave out Kumbh, about more than 20% growth is there year on year in tourism industry. We already are very strong in textile, apparels and footwear, sports goods production. That is being strengthened. EV automobiles, 14 to 60% of the sale is in Uttar Pradesh. We have defense and aerospace. As I said, 6 nodes are there. BrahMos, the missile, is made in Uttar Pradesh. Now we have 34 policies. The mother policy and the main policy is Industrial Investment and Employment Promotion Policy of 2022. But I'll restrict myself to 2 policies. You can see on the right side there is a foreign direct investment policy. Anyone who is coming through FDI route, Fortune Global 500, Fortune India 500 companies, they can avail of this policy. The incentives in this policy are land rebate. You get a upfront land rebate. Capital subsidy is there. Stamp duty exemption is there. SGST refund is there. Capital interest subsidy is there. And electricity duty exemption is there. EPF reimbursement, transportation subsidy, R&D incentives, skill development subsidy, they are also part of this. These are the 34 plus sectoral policies which I was talking about. They are the best in the country. We see to it that whatever any state is offering, we include it in the policy. Now I come to what I was talking about, the FDI policy. If you look at it, these are the salient features. And more than that, you can customize it. Any of the concessions or rebates or subsidies that you want, that can be provided under this policy. So you have front-end lab subsidy up to 80%. If it is in Western UP, it is 75%. If it is in other parts, Bundelkhand or Eastern UP, it goes up to 80%. Capital subsidy up to 35% in 7 annual installments. Net SGST refund, 100% stamp duty and registration fee waiver, 100% exemption of electricity duty, green industry incentive up to 54,000 SGD, logistics subsidy up to 43,000 SGD, skill subsidy, training for 500 persons, refund of patent registration fees, grant for setting up of R&D centers or center of excellence, and industrial housing up to 2.15 million SGD. Just as an illustration, we have put in this slide. So if you are coming in and it becomes operational once you invest more than 100 crores. That is 13.93 million SGD. So if you are putting up a unit, say in Noida, Greater Noida, the western part, so you get on land subsidy, you get 75% subsidy. So 75 million SGD is your incentive. Effective cost is 25 million SGD, and it is upfront. The capital subsidy is 30%. So 30% is off. Effective cost for you is 70 million SGD, and this can go up to 35% if you put it in another region. And 100%, as I said earlier, 100% is SGST refund, attractive skill development incentives. You get to customize it. You choose the guys who are going to work at your unit, and you skill them. 100% exemption in electricity duty, 100% exemption of stamp duty, incentive for setting up effluent treatment plant, land subsidy at the time of allotment. As I said, it is upfront. SGST benefit for a period of 10 years, and electricity duty exemption and skill development subsidy for 5 years. Capital subsidy in 7 equal annual installments. So this is, in a nutshell, the FDI policy. The next relevant policy that we thought will interest you
Though we have 34 policies, but 2 policies we are taking up. The next is the GCC policy. The sector highlights are, we are 6th, UP is 6th position in software exports in India. GCC hub for software and tech sector is already there in Noida, Greater Noida area. We have 6 software technology parks operational in Noida, Meerut, Lucknow, Kanpur, Agra and Prayagraj, serving around 300 registered IT units. 3 parks are under development. Noida has about 14% office space of the country, and that is at competitive metro pricing. Now, under the policy, what we are offering is land subsidy of 30 to 50%, again, depending on the region you are coming in, of capital subsidy. Capital subsidy is 25% of eligible investment up to 25 crores, that is about 5.38 million SGD. Interest subsidy of 5% on loans up to a maximum of 22,000 SGD for 5 years. 100% exemption or reimbursement of stamp duty. OPEX subsidy of 20% on lease bandwidth power up to 17.20 million SGD per year. Payroll subsidy of up to 2,674 SGD per employee per year for 3 years. So this is the SGD policy, the GCC policy. Now, there is a huge potential under tourism, as I said, and we have the Buddhist circuit and famous places, that religious places you have heard, that is there. Ecotourism is another opportunity. For investment facilitation, we have Nivesh Mitra, Nivesh Sarthi, and online incentive management system. So as soon as you are planning to invest, you apply online, and we assign a relationship manager to you. He handholds you. He takes you through the whole process till you set up the unit, and even after that. These are a few of the companies that are with us. And we are also developing an area by the name Singapore City in Yamuna Expressway Authority. And it's about 500 acres, proximity to international airport. As you see, Sector 7, it is just next to the Jewar International Airport. And the land use will be mixed land use with world-class urban planning. 70% will be industrial, 13 commercial, residential 10%, institutions 5%, and amenity 2%. Potential sectors for you would be medical devices, electronics, semiconductors, automotive components, AI and robotics, logistics and warehousing, aviation-linked industries. And we come to the last slide. I'd like to sum up that there is rule of law. Honorable CM sir has ensured that. And the first beneficiary is law and order. And contract enforcement naturally flows from the systemic improvements have been brought in, ease of doing business, deregulation, stronger institutions, and there is no reading between the lines. So there are no fine prints for you. You come in and invest. As I said, population, we have the largest consumer base, 56% in working population, 8,000 higher institutions and technical institutions, 2 lakh STEM graduates, and there is, as I said, a scheme for skilling. Under infra and connectivity, 55% of the expressways, largest railway and road network, 60 domestic and 4 international airports. Jewar International Airport is coming up. National Waterway #1, the first waterway authority is with us. As I said, MMLP is the multimodal logistic park is being developed in the Jewar area. And we have the largest industrial land bank available for allotment. And it is a policy-driven industrialization that we are following, 34 policies, best and ease of doing business, deregulation. We are the front-runner state, the top state, dedicated relationship manager. I have talked about country and sector-focused desks. We have a desk for Singapore. And access, we are all very accessible. Starting with the Honorable CM, you can see his accessibility. You send him a mail and you get an appointment and you meet him. Economy, I'll just sum up. Agriculture, we have 11% of the agricultural land, 21% of agri-produce. Largest producer, we are in wheat, rice, potato, sugarcane, dairy. GSTP estimation is 36 lakh crores. Growth is accelerating more than the national average. We have the largest budget. We have the largest infra
spend of any state in consecutively. For last 4-5 years, UP has been spending about 18 to 20% of its budget in infra creation. We are a revenue surplus state, one of the few states. We are very strong fiscally, and we aspire to be $1 trillion economy with your support. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir, for the comprehensive overview of the government of Uttar Pradesh's policy framework. Now, we'd like to hear from an investor, and we have Mr. Bob Chi, the CEO for Asia Pacific for SATS. I invite him to the dais to share your experience of investing in UP. Honorable Chief Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaste. You know, it gives me a lot of honor to be able to come here to share our experience as an investor, but most importantly, as a partner of Uttar Pradesh. Foremost, I want to thank the Chief Minister himself for taking time to visit SATS Cargo Hub this afternoon. Really, this is a sign of his commitment and personal attention to foreign direct investment and his commitment to ensure that our investment in Singapore will be a successful one. Now, you know, we have invested quite large. We have made a commitment to invest very large in Uttar Pradesh. For your information, we are committed to invest up to 4,500 crores already in Uttar Pradesh over the course of 4 phases of our development. We have already invested close to 1,000 crores already in the new Jeva Airport. We are building a spanking new cargo facility that will raise and elevate the standards of Jeva Airport into an international one. More importantly, after this 1,000 crores, I think maybe because you all convert that in Sing dollars, right? So, okay, it's about 150 million. And I'm pleased to let the CM know that immediately we will be investing another 600 crores to develop adjacently an integrated cargo logistic park side by side to the integrated, what they call that, the cargo terminal. So we are indeed fully invested in Uttar Pradesh. That's our commitment. Now, SATS, through our joint venture, AI SATS, is the one that is making this investment. And many of you will ask, why has SATS decided to make this investment? Very simple. There are only 3 reasons why we have decided to do that. And our investment narrative is simple. Number 1, we are highly bullish about the growth prospects of Uttar Pradesh. It's driven by its growing agricultural, industrial, and services base. Over the past decade, the state's air cargo volume has also nearly grown 5-fold, expanding at a strong double-digit compounding rate. Uttar Pradesh is going to be a powerhouse of India in the future. And therefore, SATS have decided to take first mover advantage to be in Uttar Pradesh. So, ladies and gentlemen, please be early there. All right? Don't wait for too late. It'll be too long, right? Secondly, from our earliest engagement, we have found that the Uttar Pradesh administration to be a very progressive one. And what I mean by progressive, number 1, they are very responsive. Number 2, they are solution-orientated. Number 3, they are proactive. The state government is particularly open to new investments related to the implementation of the latest technology and digitization, as well as
providing employment opportunities in developing highly skilled talents for the local population. So number one, I think that is most important for us because they are also looking at upgrading, upskilling, and making sure that the latest of technologies is being applied in Java Airport. Third, and to me is most important, is that we have witnessed firsthand the government's strong proactive business policies, and we certainly appreciate the friendly support that they have offered to us. These are key attributes that global companies like us deeply value, and they play a critical role in reinforcing our investment commitment in Uttar Pradesh. We have no regrets investing there. Finally, we believe that this partnership with UP is a win-win partnership. Ladies and gentlemen, beyond the financial investment, SETS is looking forward to play an active role in developing the air freight logistic ecosystem, linking Uttar Pradesh, their local and primary industries, to have access to the world through our global network of 225 locations in 27 countries. In addition, we hope to transfer the best practices and the best-in-class systems and technologies into our investment in Noida. This is our commitment to you, Chief Minister. So once again, we thank you, Honorable Chief Minister, for your great leadership and for creating an environment where global companies like us can invest with confidence, operate in clarity, and grow with purpose. We therefore look forward to deepening our partnership with the state of Uttar Pradesh in the years ahead. Thank you once again. Thank you, Mr. Bob. I think that was wonderful to hear from you, and I would say that it makes more impact when we hear from someone who's invested. And we hope that going ahead, we'll hear more such stories from investors in UP and investors in India. And we've had a lot of positive participation from a lot of industry partners here during the CM's visit. And a lot of them have gone ahead and formalized their interests in the form of agreements and MOUs. You've been seeing a lot of MOUs on the social media feed of the government of Uttar Pradesh. We have some more where these MOUs have been signed and they have been exchanged, but we would like to take this opportunity to have them to have a photo op with the Honorable CM's presence here on the dais. I will just read out the names. May I request the representatives of the company to please enter the dais from here and have the photo and then exit from out. Firstly, may I invite the representatives from Mrs. Blue Planet who have signed an MOU pertaining to integrated waste management. Yes. The next would be AC Aviation Private Limited, Komar Group. And following AC Aviation would be Gayatri Chain, FNB and Associates. We have AC Aviation Private Limited, Komar Group. The MOU is on MRO and helicopter parts repair. May I request the representatives of Gayatri Chain, FNB and Associates to be ready for... After that, we'd have Ishtara Jewelry and Master Production would be signing an MOU with the government of UP. Now we have, may I call Ms. Jaffa Comfeed, MOU on agribusiness and food production to please come up on stage. This would be followed by KLK Ventures, MOU on solar panel manufacturing. May I invite...
Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are hard pressed for time, as you know. So we are just, and I'm sure you're all eager to hear from the Honorable Chief Minister. So it's my honor to invite the esteemed guests of this evening, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, to kindly address the gathering. सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के द्वारा आयोजित आज के इस बिजनेस लीडर्स के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सिंगापुर में भारत के माननीय उच्चायुक्त श्री शिल्पक अंबुले जी, वाइस चेयरमैन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन श्री प्रसून मुखर्जी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर और पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स और मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के सिंगापुर में उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेलीगेशन को, जिसको लेकर के मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें सिंगापुर में आप सभी बिजनेस लीडर के साथ में संवाद करने का एक अवसर दिया और इसमें श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की इस पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो आज इतने व्यवस्थित तरीके से यहां के बिजनेस लीडर के साथ इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद की है। मित्रों, मैं कल प्रातःकाल यहां पर आ गया था और प्रातःकाल से ही हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए जो अब तक के हमारे प्रयास हैं और आगे के उन प्रयासों को कैसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहां के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत हुई। यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरे संवाद के कार्यक्रम हुए। यहां के माननीय राष्ट्रपति जी से, यहां के माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहां के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहां के होम मिनिस्टर और अन्य यहां के ऊर्जा मंत्री, इन सभी के साथ संवाद के साथ ही हम लोगों ने कई सेंटर का भी निरीक्षण किया। सिंगापुर में स्किलिंग के लिए जो कार्य हो रहा है, इस दृष्टि से मुझे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटर आईटी का कल भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने यहां पर एमआरओ और सेट्स का भी वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया और उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही सिंगापुर और उत्तर प्रदेश
इस विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि कल से अब तक हम लोगों ने यहां पर तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूबीपीएन, जीएसएस ग्रीन, शेपकॉर, ब्लैकस्टोन इत्यादि संस्थाओं के चेयरमैन एंड सीईओज के साथ हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अन्य बिजनेस लीडर के साथ भी अलग अलग चरणों में हमारी यहां पर बातचीत हुई। ये कल से लेकर के अब तक के इस बिजी शेड्यूल के बीच ये हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब पूरे सिंगापुर के आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मुझे और मेरी टीम को संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने भारत की प्रगति को पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा। आज जो भारत की प्रत्येक क्षेत्र में जो भी प्रगति देखने को मिल रही है, इस प्रगति के जो शिल्पी हैं और नए भारत और आधुनिक भारत के जो शिल्पी हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्हीं के विजन को हम लोगों ने यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर ने आपके सामने यहां पे एक प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया। यहां के कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने भी उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में आपके सामने और हमारे साथ जो अभी तक एमओयू हुए हैं, इन एमओयू के बारे में भी यहां पर कुछ महानुभावों को मंच पर आकर के आपके सामने एक फोटोग्राफ्स भी उनके सामने आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमें ढेर सारे उन संभावनाओं को, और मुझे अच्छा लगा कि यहां का हर इंडस्ट्री लीडर आज भारत के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, उन सभी संभावनाओं को आपने यहां पर देखा होगा। और वे सभी अपनी बातों में भी इस चीज को महसूस किए। और मैं कह सकता हूं आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, और इन सभी वातावरण के बीच में हम लोगों ने यूपी के अंदर एक बड़े लैंड बैंक के साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है। न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, उन सभी को हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे आपको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध है, स्किल मैन पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के अंदर है। लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के पास है, प्रचुर लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट के पास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, सर्विस सेक्टर में होटल्स की चेन को स्थापित करने के लिए, इन सभी सेक्टर में आपके पास वह लैंड बैंक, यूपी गवर्नमेंट के पास वह लैंड बैंक है। और किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए जो उसका बेस चाहिए वो एमएसएमई यूपी के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अलग अलग सेक्टर की यूपी के अंदर पहले से कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इतने विशाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने यहां पर भारत और सिंगापुर के बीच में जो व्यापक रणनीतिक साझेदार के फोकस सेक्टर हैं, इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, स्मार्ट नेशन टू सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पर ये सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष जो हमारा एफडीआई है, सबसे अधिक सिंगापुर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और उन स्थितियों में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसके लिए अपने आप में एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है, बल्कि हमने लैंड ऑफ पोटेंशियल से लैंड ऑफ परफॉर्मेंस की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आप सबके सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। इसका कारण भी है और एक प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़कर के आज वह 13 लाख करोड़ से बढ़कर के 36 लाख करोड़ होने जा रही है। यानी दुनिया के अंदर किसी भी अन्य स्थान पर यह देखने को नहीं मिला होगा कि 9 वर्ष में वह राज्य लगभग 3 गुना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सफल हुआ हो, पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा हो, ये देखने को नहीं मिला होगा। और भारत की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर 9.5% का अपना योगदान, यानी 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश आज वहां पे दे रहा है। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी सफलता प्राप्त की है। हमने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में भारत के अंदर फर्स्ट रैंक यूपी के पास है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो राज्य के अधिनियम है, 13 राज्य अधिनियम है, इनमें से 99% जो आपराधिक प्रावधान थे उन सबको हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया है। और पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने की दिशा में आगे बढ़ा है। और इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि आज यूपी के अंदर ये SSS का ये संगम हमें सेफ्टी भी है, स्टेबिलिटी भी है और यूपी के अंदर स्पीड भी है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबको
यह सभी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोगों ने इन सभी सेक्टर में जो कार्य किए हैं, मेरा मानना है कि ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, इसे इफेक्ट को हम आगे बढ़ा करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर का हमारा विजन है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है। और मेरा मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेगा। और इस दिशा में हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास अलग अलग सेक्टर में इस रूप में हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बातें यहां पर एक प्रेजेंटेशन के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, भारत के अंदर सबसे ज्यादा फूड ग्रेन का उत्पादन उत्तर प्रदेश करने वाला राज्य है। हमारे पास भारत की एग्रीकल्चर की 11% लैंड है, लेकिन 11% लैंड में उत्तर प्रदेश 21% से अधिक फूड ग्रेन का उत्पादन करता है। 21% का मतलब यह भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। वैल्यू एडिशन के साथ इसको जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ना और इससे संबंधित तमाम अन्य अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक निवेशक को वहां पर आमंत्रित करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क और गुड गवर्नेंस का आज के दिन पर सबसे अधिक लाभ निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो सकता है। एक्सप्रेस वे के बारे में जो आपको बताया गया कि भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% यूपी के पास है। रेलवे नेटवर्क का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का यूपी के पास है और वह भी 16,000 किलोमीटर का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश की 7 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है, ये भारत के अंदर सबसे अधिक है। और एयर कनेक्टिविटी में भी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। अभी बहुत जल्दी हम उसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही कार्गो और एमआरओ की सुविधा विकसित करने की दिशा से भी सिंगापुर के यहां पर आज हम लोगों ने उन सभी क्षेत्रों के अंदर दौरा भी किया। यह सच है कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति लैंडलॉक्ड के इस दर्द को दूर करता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन ने भारत की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि के साथ साथ सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। जल संसाधन को, उन नदियों को हम लोगों ने वाटर वे के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया और भारत का पहला वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है और इस पर हमारे मल्टी मॉडल ब्लेज की स्थापना करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी काफी अन्य कार्यों को किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्ष की प्रोग्रेस का परिणाम क्या है। भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ ही पिछले 9 वर्ष के अंदर जो इंडस्ट्री ग्रोथ यूपी के अंदर हुई है यह 14,000 से बढ़कर के आज के दिन पे 31,000 से अधिक इंडस्ट्रीज अकेले यूपी के अंदर स्थापित हुई है और ये यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यूपी इस दिशा में कार्य कर रहा है। यूपी जिन क्षेत्रों में अपने निवेशकों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उत्तर प्रदेश ने वहां पर उपलब्ध करवाई है, जिसमें निवेश मित्र है, निवेश सारथी है और उद्यमी मित्र के माध्यम से इन्वेस्टमेंट
सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट के बाद इंसेंटिव वितरण का कार्य ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा सीधे चला जाता है, यह उपलब्ध हम लोगों ने वहां पे किया है। टाइम बाउंड क्लियरेंस की व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट लैंड अलॉटमेंट की व्यवस्था, यह उत्तर प्रदेश के अंदर है। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी के पास हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों के साथ ही एफडीआई और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के लिए भी अपनी एक डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। 75,000 एकड़ से अधिक हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है और जितने हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे पर भी हम लोगों ने 27 ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है जो उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको कहा कि हमारी 56% आबादी वर्किंग फोर्स है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में 56% से अधिक की आबादी आपको हर एक सेक्टर में कार्य करने वाली, चाहे वह इंडस्ट्री के फील्ड में हो या फिर अन्य कार्यों के लिए, वहां पर वह उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्किल मैन पावर उपलब्ध होगा। लेबर रिफॉर्म करने वाला, एजुकेशनल, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई, ओडीओपी, स्टार्टअप पहल, इन सभी में उत्तर प्रदेश की ये ताकत हम सबको आगे बढ़ा रही है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर अपना एक्सपोर्ट को लगभग 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और आज के दिन पर मैं इस बात के लिए भी आप सभी बिजनेस लीडर के साथ इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं पर हम लोग अपने सिंगापुर सिटी के लिए भी लैंड की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रस्तुत की है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन से जुड़े हुए आप सभी बिजनेस लीडर्स को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। आपका निवेश वहां पर सुरक्षित होगा और सुरक्षित होने के साथ ही वहां पर आपकी उन संभावनाओं को, जिसके माध्यम से आप बिजनेस की अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भारत के अंदर एक सुरक्षित स्थान होगा और उसमें उत्तर प्रदेश अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करता है। मैं एक बार फिर से आप सभी का आज के इस बिजनेस लीडर के इस संवाद के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं भारत के माननीय उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए अपने सकारात्मक योगदान के लिए मैं उनका भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Thank you so much, sir, for your kind words. To conclude the formal program, I now invite Ms. Navita Meyer, Country Representative FICCI, to deliver the vote of thanks. Namaskar and good evening, everyone. It is my pleasure and honor to propose the vote of thanks at this very important roadshow showcasing investment opportunities in the state of Uttar Pradesh, India's largest state and one of India's fastest growing economies. This roadshow, held alongside the visit of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, reflects the state's strong commitment to deepening economic engagement with Singapore and building long-term strategic partnerships.
Along with Singapore Business Federations, FICCI is proud to be a partner to be hosting this roadshow under the aegis of the guidance of High Commission of India, Invest UP, and the government of Uttar Pradesh. Thank you so much for joining us here today. Please enjoy the evening and please do connect with everyone over the networking dinner and get an opportunity to exchange more information and opportunities about Uttar Pradesh. Thank you so much. Namaskar. Thank you, Navita ji. With that, we conclude the formal event. I invite everyone to join us for dinner hosted by the government of Uttar Pradesh. May I request the dignitaries to please, everyone to please remain seated while the dignitaries exit from the dais. Thank you.